Okay, so we are live now. Good morning, everyone, and welcome to another Sustainable Saturday session. Today we have with us Mr. Kishor Nadar. Kishore holds a master's degree in environmental botany, and he brings a wealth of knowledge and experience to the table. With his background in working with the forest department, including tasks such as leopard census, camera trapping and installation, wildlife rescues, he is a valuable resource, not just to us, but to the forest department as well. Additionally, as the Assistant Project Co-ordinator at Green Yatra, he is actively contributing to the implementation of Miyawaki Plantations on ground. And Kishore has been a very dedicated member of the ground team, and today he is here with us to share some knowledge about Indian biogeography. And this is a particularly interesting topic because India is known to be a country with very great diversity and is also called as a hotspot. So Kishore will be sharing with us today his knowledge and a little bit about our biogeography. So over to you, Kishore. Hello, thanks for the introduction, Sandra. Myself, Kishor Nadar. Welcome all of you. Today, I'll be taking up the Sustainable Saturday talk on biogeography of India. In this topic, I'll cover up the topics such as the biogeographic, flora and fauna, types of ecosystem, biogeographic locations of India, and also the ecological problem of these regions, ways to tackle, and why is biogeography too much concerned also. And India is India has a wide diversity of biogeography. We'll come to know in this session. Okay. Okay, biogeography. What's biogeography? Biogeography refers to the distribution of various species and the ecosystems geographically. So, Earth has different geographic from the poles to the equator. We can conclude the North Pole and South Pole. These two locations have like two low temperatures, freezing temperatures, and in the equatorial regions, the temperature is totally opposite. Also, due to this, the temperature regions, the flora and fauna also changes. Also, geographic location and the landscape, also the soils, the alpine regions, the also the different mountain regions changes the pattern of climate, the weather, also the flora and fauna. So biodiversity also is related. Biodiversity is just the living matter, living forms of species in an environment. So second, come to the coming. Let's classify it more and talk about. Let's talk about flora and fauna. What's flora and fauna? Flora and fauna refers to the plant. Flora refers to the plant life which is found in a particular region. Flora is the word. Flora comes from the Roman goddess of spring, also known as the flower goddess of flowers, especially the wild flowers, which springs in the rainy seasons and all. The Roman goddess named after the flora, and then thereby taking it the name flora. And fauna. Fauna is the all the animal species found in a particular region. Same goes that the fauna also is the fauna word comes from the goddess of earth, the sister of faunus. The faunus is the spirit of forest. So these are naturally occurring species of a particular area. And we'll talk about little of ecosystem and then about the interdependency of flora and fauna of a region. The left hand side, which is the food chain. The food chain is the main thing I'll talk about, because the after it we can come to know about the ecosystem. Food chain from is the you can see the producers and the consumers. The plants are autotrophic and consumers are heterotrophic. They don't produce their own food. Plants produce their own food. The grasses, that the producers, and the and thereby it is eaten by the grasshoppers, which as it comes as a primary consumer. Then comes the consumer, tertiary consumer to the apex predator. Thereby it just after the death it just decomposes as a fungi and other living matter get decomposes, then coming directly to the fertility of the soil to the grasses. So it's a chain by chain the energy transfer is done. And coming to the second part, here it shows the totally ecosystem. There you can see the pond and the land ecosystem. Here the pond has different ecosystem and different plants and animals for flora and fauna. We can tell the flora and fauna inside the pond. And
There goes the flora and fauna of the terrestrial is different, but all of it works together, forms an environment that is ecosystem of a particular region. And then we can tell the biodiversity of a region is very high according to the landscape and region सो बेसिकली types. ये जो अलग अलग एनिमल्स है जो हर एक इकोसिस्टम में मिलते हैं टेरेस्ट्रियल एंड दिस एक्वाटिक they are very specifically only like particularly to that region, right? I mean, what I'm trying to ask is, I am so sorry for framing it so badly, but Yes, okay. every animal is very sensitive to the ecosystem that they are found in, Yes, right? you can say sensitive. It lives in that ecosystem by that environment. So the environment creates the habitat bubble for that species, and then thereby it grows. Hence, it's interdependent. If the changes happens due to anything, like an human entering into the ecosystem and destroying it, the Hmm. bubble gets broken, and thereby the species will be destroyed. Correct. So that's the thing. Okay. Okay. And continuing, like types of ecosystem. The ecosystem, there are different types like forest ecosystem, grassland ecosystems, mountain ecosystem, desert. Forest has a different climatic changes and all the evergreen forests and different. And the sunlight just very rarely sunlight gets touched to the soils and all. And second to it's the grasslands like the African savanna we can see in the savannas. Mountain is like the Himalayan ranges. There are very less trees found, it less trees or anything. Grasses also are very tiny shrubs we can find, but the diversity and living forms are different, and we can put the same other animals in that ecosystem because it doesn't survive in that system, but they are adapted to those ecosystems perfectly. Desert also, the temperatures are soaring height, but the species are well versed with it. A river ecosystem, it is fresh water. There are fishes which can't live in ocean, but they live in river systems. If we degrade that things, the river ecosystems, the bubble gets breaks and thereby destroying its the ecosystem. Hence, pond ecosystem. It's also the pond. The when the pond gets dry and or it gets freezed, the amphibians like alligators and crustacean digs up and lives inside for that, and also sometimes it gets hibernate the species to the favorable conditions arrive, and thereby it flourishes. But that the conclusion is that different ecosystem have different type of adaptability, and thereby it just grows. Let's coming to the topic like biogeographic zones of India. India has 10 different zones of India is classified into 10 different zones of biogeographic, because it has different areas, a different landscape, and the climate also. If there are the changes from some areas, they will come here. The first is a trans Himalayan, which is the Leh Ladakh region, and then comes to the Himalayas, the main Himalayas from the north, from the eastern to the western part. Also, then comes the Gangetic Plain, the Ganga rivers. There are different rivers growing, river flowing through it, and thereby the fertility of the those plains are very high. Northeast are truly different. It has very high rainfall. Deccan Peninsula, it's the plain. It's a plain area, but different adaptations have happened to the plants. And yes, it's a very beautiful areas. Semi-arid, the regions have low rainfall. Deserts are very rare rainfalls have happened. Western Ghats are from the western side. Those are hilly mountains, thereby the Western Ghats or the rivers gets originated from the Western Ghats to the eastern side they go. Coastal regions and those islands, we'll talk about it singularly. First comes the Trans Himalayan. Trans Himalayan region is the uppermost region behind the Himalayas. We can say it is the Himalayas only. It's ranged about 4,500 meters above the sea level. The states such as Ladakh, Jammu Kashmir, North Sikkim, Spiti of Himachal Pradesh. These zones are very sparse, and the vegetation is alpine scrub. We can't see any trees growing over, and also the glaciers are found. Glaciers, the water gets originated from these areas also.
and the pond, the lakes are truly we can say unpolluted, but the amphibians living in this are getting very low because of the climatic changes and the human entrance. And the flora and fauna are such as the junipers, rhododendrons are totally beautiful. They flourish beautiful flowers in the spring seasons when the temperatures get little favorable. Ephedra, and these all are adapted to the higher, the low temperatures such as freezing temperatures. They don't get degraded or anything. They just live in those conditions, and then when the favorable conditions comes, they fruit and flourish. The flora and the fauna. Coming to the fauna, there are many other. I just put the some pictures of the living organisms such as the flora. The snow leopard are totally apex predator or living in that areas. We can't spot a snow leopard there. It's very rare to see a snow leopard. And Tibetan macaque, the normal monkeys don't live there. They have so many adapted. They have adapted themselves as the furs and all. Wild Tibetan as the culture. Let's talk about cultural. The I'll say in also Hindi also. The people are not. They don't stay over there every all over year. They just come across the they just क्या बोलते हैं कि वो रहते हैं एक समर सीजन में टाइम, एंड देन वापस वो चले जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर उतना ड्रॉप हो जाता है इन द विंटर्स वहाँ पे। यहाँ वेजिटेशन में यहाँ पे सैफरन्स वगैरह उगते हैं, सबसे कमर्शियली सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। एंड ये जगह पे अभी टूरिज्म ज़्यादा हो गया करके कम अभी ज़्यादा रहने को स्टार्ट हुआ। बिफोर दैट there are very less people used to stay. The population was very less. They used to come, there are like wanderers. They used to, animal husbandry was more. Vegetation is very less, so farming also is less. Coming to the Himalayan region stretches from the western to the eastern part, from the Jammu Kashmir to the Assam to the east. It is a fully hilly region, and it has different other like western Himalayas, central Himalayas, and then northeastern Himalayas. It has alpine scrubby forest, mixed deciduous and subalpine, and also the grassy meadows. The vegetation changes from east to west. Okay. The flora here are the silver oaks are used for the cricket bats. Rhododendron species again, silver fir, oaks. The fauna here are the red panda you can see in the north, um, eastern Himalayas, the Himalayan tar. These are the goats living on the edges of the hilly areas. They are totally adapted. The golden langur, you can say different species have lovingly adapted to this. The people also adapted to the agricultural way. The hilly areas, they form the like terrace farming, and majorly they use like they लोग कैसे कि टी फार्मिंग होता है ग्रासलैंड में, जैसे कि अगर हुआ तो ये चावल चावल की खेती होती है। यहाँ पे अडेप्टेड हो गए, बट यस एग्रीकल्चर हर साल नहीं होता है। कम कम के टाइम के रेनी सीजन के टाइम अच्छे टाइम पे। So, डेंजेटिक Kishore, प्लेन। I came across this term cold desert. Like, सुना है तुमने ये पहले Yes, कभी? cold desert. Cold desert is a trans-Himalayan, which I talked the first. Oh, It's a cold desert. The vegetation is very less, very less. Its okay, vegetations are scrubby only. क्योंकि okay. वो वहाँ पे एरियाज इतने कोल्ड हो जाते हैं, एंड वहाँ पे इतना फर्टाइल सॉइल बनता नहीं है। फर्ट सॉइल में जल्दी उगने के लिए जो ट्रीज है वहाँ पे हाइट्स भी हमारे 4,500 मीटर्स हाई है सी लेवल से। सो वहाँ पे नॉर्मली जो भी उगता है, they are very scrubby, and Okay. they tend to like xerophytic adaptations were not like the desert ones for the हाँ. colder regions के लिए। So it's basically like your regular desert जो राजस्थान में दिखता है, हाँ, except कि वहाँ just पर ice है. temperature उल्टा हुआ, हाँ. temperature अलग है। Okay. Got it. Got it. Yes. And coming to the Gangetic Plain, this is the most fertile लैंड ऑफ इंडिया। यू कैन से हम लोग की अर्थ भी बोल सकते हैं, इतना इतना फर्टाइल है। द गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, और बहुत सारे रिवर्स यहाँ पे से जाते हैं। इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ राजस्थान टू द उत्तर प्रदेश इन द सेंटर, बिहार, एंड गोज टू द वेस्ट बंगाल। द रिवर्स गो, it's the most plain, the alluvial soil you have is found,
एंड यहाँ पे सबसे अच्छा ट्रीज बोलेंगे तो शीशम है, साल, शोरिया रोबस्टा, खैर। एंड fauna, the Indian nation's pride, the tiger, Tiger. Gangetic dolphin, freshwater. It's a freshwater species. It's like fresh to medium, like saline जैसे जब आते हैं वो एरियाज तक इनको देखा गया है। एंड द स्वाम्प डियर, यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे एक फर्टाइल सॉइल जो इतने इयर्स से प्रोड्यूस हुआ है। एंड ये जो एरियाज में फार्मिंग है यहाँ, ये इट्स लाइक मोहनजोदड़ो एंड वो टाइम की टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, ये एरियाज में भी तभी भी एग्रीकल्चर चल रहा था। इट्स टू दैट ओल्ड। एंड यहाँ पे लाइक यू हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, यू डोंट हैव टू डिग एनी बोरवेल्स फॉर वेल्स फॉर एनीथिंग, जस्ट 100 मीटर्स भी नहीं, उसके पहले पानी आ जाता है। इतनी एलुवियल सॉइल है और पानी इतने ज़्यादा है। एंड यहाँ पे शुगर केन की प्रोडक्शन ज़्यादा है। टाइगर टू स्टे इनसाइड दिस शुगर फील्ड। It's a different ecosystem, but very lovely thing. Let's talk about the northeastern part. Eastern part are the Seven Sisters, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur. यहाँ पे भी हिली रीजन्स है, हिमालय कनेक्ट होता है, थोड़ा नीचे तक जाते जाते वो अलग हो जाता है। यहाँ पे ट्रॉपिकल कैन से एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, लाइक यू कैन यहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड हुआ है, चिरापुंजी एंड ऑल। सो यहाँ पे हर साल यहाँ पे बारिश होती है। सो रेवर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, द बायोडाइवर्सिटी इज वेरी वेरी रिच, एवरीवेयर द वाटर इज प्लेंटी। यहाँ पे स्टार्टिंग आप ईस्टर्न नॉर्थ 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 में जब स्टार्ट में नॉर्थ के नॉर्थ ईस्टर्न के जब पार्ट, जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब कि बाम्बू वगैरह, बाम्बूज फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। फॉक्सटेल और ऑर्किड्स ओनली ग्रो इन रेन फॉरेस्ट ओनली। good amount of water is needed because they don't have the roots inside the soil, the air just the water moisture उन लोग उससे ग्रो होते हैं। फॉक्सटेल एंड बैनियन ट्री भी यहाँ पे काफी ग्रो होते हैं। एंड फौना में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है वन हॉर्न राइनोसरस। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इनसाइड, एंड ओनली काजीरंगा नेशनल पार्क हैज द अथॉरिटी फॉर यूजिंग द राइफल्स फॉर द फॉरेस्ट ऑफिसर्स। बाकी कोई नेशनल पार्क के पास अथॉरिटी नहीं है कि उनके पास गन्स यूज करना, क्योंकि इट्स सो पोच्ड। एंड यहाँ पे अभी इतने सारे कम हो गए तो प्रोटेक्शन इज नीडेड फॉर दोज वन हॉर्न राइनोसरस, उनके लिए। एशियन एलिफेंट, हुलॉक गबन। यहाँ पे भी प्रैक्टिसेस कैसे कि राइस फील्ड्स एंड स्टेप स्टेप फार्मिंग है। असम साइड यहाँ पे टी प्लांटेशन काफी ग्रो होते हैं, टी प्लांटेशन आर वेरी फ्लरिश्ड। द स्टेप फार्मिंग इज वेरी कन्वीनियंट फॉर द टी प्लांटेशन। यहाँ पे पानी पानी रुकता नहीं है, टोटली टोटली प्लेन्स में ही है, तो इट इज वेरी गुड फॉर टी प्लांटेशन। एंड राइस पैडी फील्ड तो वैसे ही स्टेप फार्मिंग में बन जाता है। Indian desert zones are totally, we will say, truly sparse, like पानी वगैरह इट्स वेरी कम। बट यहाँ पे भी एनिमल्स सब फ्लरिश होता है, एंड इट इज वेरी सेंसिटिव टू द क्लाइमेट चेंज। इट इज फ्रॉम द अरावली हिल रेंज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान के सैंड एरियाज में पाया जाता है। ये रन ऑफ कच्छ तक टू द साउथ। फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे रोहिरा रोहिरा राजस्थान का स्टेट ट्री है। वी कैन सी बेर, थोर, ये कैक्टस प्लांट है। फौना में हम देखेंगे तो इंडियन ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सबसे वी कैन से एंडेंजर्ड स्पीशीज है। एंड टोटली यहाँ पे इस पे बहुत फोकस है। एंड जब इसका पॉपुलेशन बहुत कम हो गया था, एंड स्टिल राइजिंग अप, यस, बट कम है ड्यू टू फेरल डॉग्स। यहाँ पे इसको मार दिया जाता है, फेरल डॉग्स की वजह से इसका पॉपुलेशन कम हो जाता है। कैराकल, ये भी वेरी रेयर सीन है। एंड डेजर्ट वुल्फ, विल सी। हम बोलते हैं कि डेजर्ट में कभी प्लांटेशन सोच नहीं सकते, पानी नहीं है, बट यस, द सिविलाइजेशन ऐसा है कि उनको रह के उन लोग ने अपना लिया है। एंड राजस्थान पीपल एवरीवेयर दे वॉन्डर, लाइक एक पर्टिकुलर एरियाज जब पानी है, दे चेंज देयर लोकेशन टाइम टू टाइम। ऑल्सो द फार्मिंग ऑल्सो इट्स प्रैक्टिसेस अ डिफरेंट वे। सो the need of water is not that much. They have different resources for water, like they practices the
पानी कंजर्वेशन का उनका अलग टेक्निक्स है, सो दैट यहाँ पे इनको अपना नया मॉडर्न सिविलाइजेशन से पहले ही उनके पास अच्छा सा पानी वगैरह स्टोर करने का एक लोकल सिविलाइजेशन का अलग है. So there is no problem, we can say there is not nothing a problem of water. They have adapted also, they have live it, the culturally is very have यहाँ पे दे हैव बाजरा एंड ये सब ज्यादा इन लोग ने अपनाया, जैसे कि अब नॉर्मल अपना स्टार्च फूड जैसे है राइस है, उससे ज्यादा इन लोग दूसरे दूसरे चीजों से अप्लाई करते हैं. सेमी एरिड में हम राजस्थान से लेके लिटिल पंजाब एंड गुजरात, ये एरिया को टोटली हम सेमी एरिड बोलते हैं. ट्रांजिशन, इट्स अ ट्रांजिशन जोन, लाइक वेस्टर्न घाट्स और हिमालयस के बीच का एरिया है. एंड इट हैज वेरी स्क्रबी, ये हम लोग थॉर्न फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, थॉर्न फॉरेस्ट है. एंड यहाँ पे we'll talk about the flora and fauna. The flora is the Indian jujube, golden shower, ashok tree, they flourish in this area. And fauna may we'll talk about the Indian lion. Indian lion is the only species now living apex predator compared to the tiger, and yeah, only it lives in the semi-arid area. And wolf and black buck. Black buck, इनफैक्ट आई थिंक दिस इज द ओनली रीजन जहाँ पे ये मिलता भी है इन इंडिया, yes, इजंट इट? yes. यस. And Indian Thar Desert, जो हम बोले थे, was the हाँ, only place where cheetah used to found, and which is totally extinct now. टोटल करेक्ट. सेम एज दैट, अभी यहाँ पे सिर्फ हमारे पास लायन ये एरिया पे ही है. एंड ये बायोडाइवर्सिटी हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बायो एक जगह पे जब ह्यूमन एनक्रोचमेंट, एनीवे द एक्सटिंक्ट जब स्टार्ट होता है, जब any species will be found in that area only. If that area is area or the bubble of environment is destroyed, the particular individual of species will be extinct. Such as ना अभी है एक ही बचा है अभी, इंडियन लाइन वही जगह पे पाया जाता है. एंड ये एंड ऑल्सो द सेमी एरिड रीजन में जो राजस्थान बिश्नोई ग्रुप है, बिश्नोई ग्रुप दे आर वेरी लविंग टू द नेचर, लाइक उनका नेचर इज लाइक अ मोर ऑफ द गॉड. ब्लैक बक, वी कैन, everyone knows that the story of black buck. They have very उनका एक नॉर्मल डियर, छोटे से प्राणी भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. कि हम फोटोज में देखते हैं उन लोग को ब्लैक बग नॉर्मल है, इनको पानी देना, इनको खाना देना, इनका एक रीति रिवाज में एक एक पाया गया है. अभी अब उनको नॉर्मल रीति रिवाज में हो गया है कि जैसे कि हम पाया जाता है कि हम नॉर्मल एक साथ में रहने के. सो बिश्नोई ग्रुप एंड जिस राजस्थानी पीपल, दे आर वेरी अडेप्टेड एंड दे आर लव्ड. यही एक चीज हमको आगे भी जाना, जैसे कि एनिमल्स एंड सबको साथ में लेके चलना चाहिए, वरना नहीं होगा. ये ऑल्सो यहाँ पे एग्रीकल्चर में जैसे बाजरा, मक्का, मेज, ये सब इनका स्टेपल फूड में आता है. डेक्कन प्लाटो, इट्स लाइक विंध्या, छोटा नागपुर प्लाटो, छोटा नागपुर कर्नाटका regions. The hilly regions is very less. The hills don't extend very tall, just as a mound of hills are found in these regions. Maharashtra, the central Maharashtra, Andhra Pradesh and Tamil Nadu also, north of Tamil Nadu also comes in this place. Flora, we'll come to our flora. The flora, the sandalwood, which is found in these regions only of India, mango, palm trees, and other species also. Sandalwood, we can, is famous for its fragrance, its aromatics, and also it's very precious economically. यस. Fauna में हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैमल्स बहुत सारे, नील गाय, दे आर वेरी tall ones like gaur हुआ, and Asiatic elephants. They reside in these plateau to the north to south in these areas. There are very good amount of space to walk around, but due to human settlements, they are encroached, and their population have the zones have been broken. जैसे कि हम देखे जाते हैं, जैसे कि प्लाटोज में पूरा प्लांटेशंस हो गया, तो फिर कॉरिडोर, द नेशनल पार्क कॉरिडोर, नाउ वी टेल अबाउट नेशनल पार्क कॉरिडोर, बट बिफोर इट यूज्ड टू बी a normal place to wander of the animals, but these are cut off directly. एंड यहाँ पे नॉर्मल कल्टीवेशन तो डायरेक्टली होता है कि टोमेटोज एंड ऑल नॉर्मल, जब अभी ये टाइम पे इतने सारे फर्टिलाइजर्स हुए हैं कि एग्रीकल्चर इज वेरी रिच. Western Ghats is a totally mountain areas regions from starting from the Gujarat to the Gujarat, and Karnataka, Maharashtra, Goa, and to the Kerala sections. And it is a very biological hotspot है यहाँ पे. Talking about the flora, the species such as kokum mouse found, teak, cashew,
Also different fauna such as giant squirrel. It is the state animal of Maharashtra. Lion tail macaque, leopard is very totally found in these regions. Western Ghats also in Mumbai, we can, it is totally found in the Sanjay Gandhi National Park. So Western Ghats are very rich in biodiversity. So यहाँ पे फार्मिंग तो राइस प्लांटेशन ज़्यादा होती है. एंड यहाँ पे कल्चरली हिली रीजन्स की वजह से प्लेन्स नहीं है. द इंटरेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज वेरी वेरी लाइक ज़्यादा होता है. इट्स मोर ऑफ अ वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शंस. नाइट टाइम्स they have the corridors open like for the animals and all. Talking about the coastal line, coastal regions are it starts from the Gujarat to the last Odisha regions, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu. Coastals are the यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि mangroves ecosystems are the very highly, you can say it is a biodiversity most rich biodiversity area, और fauna flora the biodiversity सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा हम फाउंड होता है. कोकोनट ट्रीज एंड सी ग्रासेस आर द सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन यही प्लांट के अंदर ही होता है. हम कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल के ऊपर होता है. सी में जो प्लांट्स उगते हैं उनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उनसे ही ऑक्सीजन बाहर आता है. एंड Correct. फौना में हम देखेंगे तो ड्यूगोंग, दीज आर ऑल्सो वेरी एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड. एंड वेडर्स एक टोटली कोस्टल एरियाज का अलग ही बर्ड्स है जो वेटलैंड्स के पास रहता है. तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के बर्ड्स डिफरेंट है, या ओनली कोस्टल एरियाज पे पाए जाते हैं. एंड ऑलिव रेडली टर्टल यहाँ पे ओडिशा के एंड वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न एरियाज में भी पाया जाता है. इनका नेस्टिंग स्पॉट्स है, और यही जगह हमारे इंडिया में कोस्टल लाइन्स में ही पाया जाता है. और इट्स वेरी बायोडाइवर्सिटी रिच. एंड यहाँ पे कल्चरल एस्पेक्ट्स में बात करे जाए तो यहाँ पे देर आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द सी. द फिशरमैन्स, कोकोनट ट्रीज, कोकोनट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ओनली. So production of coconut is very more, or also the areca gatachu supari. So economical aspects में these are plantations, and staple food will be of fishing, Fish. fishermen. आइलैंड्स में बात करें जाए तो आइलैंड्स में हम अंडमान और निकोबार, दीज आर ऑल्सो डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी. दे हैव डिफरेंट एरियाज, so that they are cut off from the mainland. So the normal mammals which are found in the elephant, tigers, yes, these are not found in these areas. So the flora and fauna are different. These breadfruit tree, the flora में बात करें तो breadfruit tree, thespesia, पोर्चिया ट्री, बनाना, दिस आर बनाना स्टेपल फूड में एक आता है जो नॉर्मली हम एक प्लेटो में रीजन्स में नहीं होता है. एंड फोना में बात करें तो दिस आर लाइक अंडमान क्रेट, हॉर्नबिल, अंडमान सर्पेंटिग्रल. दीज आर वेरी you can say only found in those areas only. Endemic there. Endemic. So talking about the ecological problems है जैसे कि starting from the loss of species. First is a loss of species in biomass. Only reason for this species and b- loss of these are human activities. Major threats is the deforestation हुआ, and फॉर डिफरेंट जैसे कि काम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इसके वजह से ही स्पीशीज लॉस हुआ. एंड देयर गोज बाय बायोडाइवर्सिटी लॉस. Changes in the climatic conditions, when the trees are cut down for a forest, the vast amount of trees are cut down, the CO2 also, ऑक्सीजन कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है. एंड देयर बाय राइजिंग ऑफ द टेम्परेचर्स, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स. ये क्योंकि फास्ट रिमूवल, जब हम एक टोटली वास्ट रीजन हम डेंस फॉरेस्ट कट कर देंगे तो रेनफॉल कम हो जाता है. रेनफॉल कम हुआ तो हमारे वाटर वाटर कैपेसिटी ऑफ द जो एक्विफर है वो भी ड्राई अप हो जाता है. ये एरियाज में अभी जैसे कि तमिलनाडु में, चेन्नई वगैरह एरियाज में, एंड सेंट्रल पोर्शंस ऑफ तमिलनाडु हैव फेसिंग दीज issues because the forest land is totally cut, and the rainfall is very less now. Before it used to be very high. Now एक्विफर्स जो पानी में अंदर बोरवेल्स मारते हैं वो तक कम हो गया है, उसमें भी पानी कम हुआ है. 700-800 मीटर्स मतलब कि फीट्स में भी कुछ पानी नहीं आता है. सो पर रीजंस क्या था? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दैट बाय वहां से पानी का एक्विफर तक कनेक्शन है. Floods and droughts due to the CO2 level rises, the temperature and temperature rises, the floods ज़्यादा होता है. जैसे कि हम एक जगह पे पानी कम हुआ, एक जगह से ज़्यादा फ्लड हुआ. The cyclones get drive to the another areas.
डेजर्टिफिकेशन, जैसे कि बोले हम थार डेजर्ट में है, थार डेजर्ट इट्स कन्वर्ट, इट्स एक्सपैंडिंग टू द सेमी एरिड रीजन्स, द थॉर्न फॉरेस्ट है. सो द एलुवियल नॉर्मल सॉइल है जो फर्टाइल सॉइल, दैट आल्सो गेट्स डेजर्टिफिकेटेड. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ऑल्सो द क्लाइमेट चेंजेस ओनली बाय ह्यूमंस. वहाँ पे जब ट्रांस हिमालयन रीजन्स, द हिमालयन रीजन्स, ग्लेशियर्स जब डिप्लीट हो जाएंगे, वापस बनने का उनको टाइम टाइम नहीं मिलता है. दे आर फाउंड फॉर thousands of years ड्यू टू द glaciers and the snow formation, but these Absolutely. can't be formed again fast. The ways to tackle the tackling is just हमको directly reforestations are the main thing. As we cut down one, we have to plant about hundreds of plants for one tree. So that's crucial. इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर, इट उसके वजह से ही हम आगे के जनरेशन्स के लिए हम आज आज कर सकते हैं कुछ. प्रॉपर मेथड्स ऑफ प्लांटेशन, प्रॉपर मेथड्स कैसे बोलेंगे हम, जैसे कि बात के 10 डिफरेंट लोकेशंस है, 10 डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी, तो डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट डाइवर्सिटी एंड प्लांट्स हर एक जगह पे अलग होता है. तो प्रॉपर मेथड ऑफ प्लांटेशन शुड बी डन बिकॉज द every area the flora and fauna changes. So Correct. you have to know the flora of that region to plant. Not if you plant a different area, खैर वगैरह जाके हम दूसरे एरिया में प्लांट कर दिए, इट विल बी लाइक अ वीड, ड्रास्टिकली हो जाएगा. नेटिव ट्रीज, वही नेटिव ट्रीज हम, it should be mandatorized in not we should not plant the other trees like for the just beautification doesn't do anything. नेटिव Correct. ट्रीज हम उसको एनकरेज ज़्यादा हम प्रभाव में यूज करने लगेंगे तभी जाके नॉर्मल फ्लोरा फ्लोना एनरिच होएगा. एंड अदर इज लाइक स्ट्रिक्ट पॉलिसीज फॉर एनक्रोचमेंट पीपल भी करते हैं, पॉलिटिकल करते हैं, गवर्नमेंट ऑल्सो करते हैं, बट दैट शुड बी स्ट्रिक्ट बॉडीज फॉर नोटिसिंग दैट. In Mumbai also there is so much amount, high huge amount of mangroves destroyed just for a dumping yard. Also we can talk about the car shed. बट ये सब चीजें बात करने से पहले स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए. नॉट देन ओनली वी कैन डू एनीथिंग. नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टू द लोकल कम्युनिकेशन. गवर्नमेंट शुड डायरेक्टली एक्टिव स्ट्रिक्ट पॉलिसीज. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, यहाँ पे कैसे कि बायोडाइवर्सिटी हर एक बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट है, तो दैट शुड बी डिफरेंट एरियाज वेयर नो पीपल शुड एंटर, लाइक संजय गांधी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क. These should, there are very biodiversity enriched area, so these areas should not be used for any other than tourism or anything. The Adivasis should stay, okay, they are living with in hand to the nature, but human populations should not go inside of these biodiversity areas. And also education sessions, touring, volunteering, educational tours मैंडेटरी. हमको टूरिज्म एक्सपोर्ट एक्सप्लान करना है, बट एजुकेशन वाइज एक्सपैंड करना है. टेलिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, हाउ इट इंक्लूड्स everything hand in hand, flora and fauna, volunteering activities, and tree plantation, planting of different native trees. There are different methods, Miyawaki methods of planting the native trees. Also green cover हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, फास्ट एंड फ्लरिश करना चाहिए ग्रीन फॉरेस्ट. So these all things come in hand, then only we can come into a picture of different biodiversity for the future generations. Absolutely. Concluding, biodiversity is essential. Biodiversity, we can't just read the books and tell how the biodiversity acts upon everything. We just have to feel, we just have to go out of the comfort zone, reach out to those areas and feel those biodiversity. Then only you can come to know about the enrichment of flora and fauna. Unless we can't conclude anything as an individual. And comparing to the climate changes and huge imbalance in the rains and all, these are all it causing problems to humans only. Humans, then to the also humans तो लास्ट आए, उसके पहले तो प्लांटेशंस फ्लोरा फोना तो इफेक्ट हो चुके हैं. देन ओनली वी कम टू नो दैट यस एवरीथिंग इज गेटिंग हैम्पर्ड. फर्स्ट ओनली हमको एक्ट करना चाहिए. बायोजियोग्राफिक रिसेंट जैसे कि बात करेंगे, ह्यूमन डिजीजेस यहाँ पे हर एक प्लांट मेडिसिनल वैल्यू में होता है. एवरी कमिंग टू द पिक्चर ऑफ कोरोना वायरस वी केम टू नो मेडिसिनल प्लांट्स यूज होना चाहिए. एंड देर आर डिफरेंट मेडिसिनल home remedies also. Before that we didn't use, only we used the medicines of
Western medicines. But after that only we know come to know the medicinal, every plant has a different medicinal value, so we should come we came to know about it. So it was there before only, but we should promote it. uh, Concluding, thank you for listening all the biodiversity. And yes, biodiversity is most important in India because India has different biodiversity zone and and enriched culture of flora and fauna, from start from Himalayas to the coastal regions to the islands. So we should be proud to that, proud to live in this country, and proud to also protect it. And also for the future generation we should give this opportunity to live in this biodiversity rich environment and all. Thank you. Absolutely. I think, Kishore, through this session, you have really managed to put light not only on, इस particular region में ये चीज मिलती है, and कैसे क्या मिलता है ये particular plant, ये particular animal, but you have also brought it to our audience's notice कि a lot of things are degrading because of a lot of human interventions. Yes. And that is something, as like one of the ways to tackle that you mentioned is education. So I think education is something that we should all through these kind of sessions take very seriously, and uh, try our best to promote tourism and to promote understanding and learning about the environment in a manner that it is helpful to the environment. And I think overall it was a great session. There are so many things that I learned from this session. Like, I really did not know that saffron is something that is grown in the trans Himalayan region, and that orchids grow only in. Yes. Yes, and orchids only grow in the rainforest regions. And I mean, these are some really interesting facts that you have taught us today. And thank you so much. And thank you so much for this session. Thank you so much, audience, for listening to this. And we hope to see you next Saturday. Yes, we will.